मानव जाति के इतिहास के दौरान दिव्य संदेश अक्षर रहस्य में डूबे रहते हैं। भविष्य वक्ता, मसीहा या जो भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, प्रायः सताए और प्रताड़ित होते हैं। उनके शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन हमें सत्य और असत्य के से कैसे अलग करते हैं? ऐसा करने के लिए कोई केवल ईश्वरीय मार्गदर्शन पर ही भरोसा कर सकता है, और सच्चाई खुद को उन लोगों के लिए प्रकट हो जाती है जो ईमानदारी से इसकी तलाश करते हैं। बुद्ध सूत्रों के अनुसार जब मैत्रेय बुद्ध मानव दुनिया में आते हैं तो पृथ्वी पर जीवन एक देवताओं की दुनिया की तरह होगी। जलवायु हमेशा अच्छी होगी, हवाएं सही रहेगी, बारिश भी सही रहेगी, भूमि नरम हरी घास से आच्छादित होगी और नदियों और तालाबों में हमेशा पानी रहेगा। लोग शांत, सुरक्षित, हर्षित और संतुष्ट रहेंगे, खाने पीना भरपूर होंगे। यह मैत्रेय बुद्ध की भूमि है जिसे भगवान शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए मैत्रेय बोधिसत्व के बुद्धत्व की प्राप्ति के सूत्र में वर्णित किया है। हमारे लिए यह पूरी श्रृंखला में कई भविष्यवाणियों में विचित्रित स्वर्ण युग जैसा दिखता है। यह एक शांतिपूर्ण दुनिया है जिसकी शुरुआत हम अपने आसपास देख सकते हैं। आइए भगवान बुद्ध की मैत्रेय बुद्ध की भूमि के विवरण के अन्वेषण करें। 경전의 내용에 따르면 영화 세계는 누구나 꿈꾸는 평화롭고 풍요로운 세계입니다. 따라서 영화 세계는 평화의 시대, 황금 시대가 도래한 세계라고 할 수 있을 것입니다. 미륵불 시대가 곧 황금 시대인 것이지요. 미륵불경에서 영화 세계를 묘사하는 대목을 소개해 드리겠습니다. As the whole world is at peace, there will be no trouble from bandits or thieves, nor robbing or stealing. The doors in cities and villages alike will never need to be locked. According to the International Crime Victims Survey of 26 countries, burglaries reduced by 26%, thefts from cars reduced by 77%, and thefts from persons reduced by 60% from 1988 to 2004. Property crimes fell by 69% in the US from 1993 to 2017. Robberies declined by 24% in the European Union from 2012 to 2016. Property crime reports in South Africa fell from 25% of households in 1998 to 7% in 2017. Crime in Japan, especially theft, has been falling steadily since 2002, reaching a record low in 2018, etc. Nor will there be any catastrophes of water, fire, weapons, or troops. Nor will there be the tribulations of famine or toxins from animals and plants. Taming their faculties, people will live in loving kindness, respect, and harmony. To one another, they will be like a son loving his father, like a mother loving her son, and they will speak humble words as taught and guided by Maitreya Buddha with loving kindness.
आज मैत्रेयी बुद्ध की प्रेम कृपा की सच्ची भावना से सुप्रीम मास्टर चिंगहाई ने भी अनगिनत लोगों को एक दूसरे के प्रति अधिक प्यार और दयालु बनने के लिए प्रेरित किया है। Love is really all that we need to have on this planet in order to have peace, to bring heaven onto our earth. Please express more love to close ones, to your pets, your neighbors, your families, to the world at large. We can never have too much love in this physical domain. Her message was so simple, and that is we can never have enough love in the world. And that was the purpose for tonight. And I think it spread over that when people finally came into the banquet hall, people were just, who didn't know each other before, were all smiling at each other. And we were overjoyed to see each other. Well, I probably hugged like 10 people that I didn't know once I walked out. The unity in the room is so great. The love from everyone, like there's a lot of joy. The message of Supreme Master Jinghai has extended just after watching her musical, even in line for the banquet. I could tell that it touched other people because even just sharing the tongs in line, everyone was peaceful and like handing, like really feeling like a sense of peace and like just wanting to share with each other. Someone handed me the tongs and was like, they're like, here, peace, we're happy, like everything's happy. Ես եւ մի քանի ուրիշ Հայաստան ժամանած ասոցիացիայի անդամներ հանդիպեցին գերագույն ուսուցիչ Չինհային եւ միասին մենք այցելեցինք ծերանոցներ, մանկատներ եւ ամենուր ականատես լինելով նրա մեծագույն անսահմանական սիրո դրսևորումները։ Սիրո այսպիսի անսահման դրսևորում ես դեռ իմ կյանքում չէի տեսել եւ անչափ հուզված էի ամբողջ ընթացքում։ Այո, հիշում եմ գերագույն ուսուցչին ուղեկցող պաշտոնական ներկայացուցիչներից մեկը մեզ հետ զրուցելիս այսպես արտահայտվեց. Ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Ընդամենը 3 օր է, ինչ հանդիպել եմ այս կանչելի տիկնոջը եւ ամբողջովին փոխված եմ զգում ինձ։ Ես բոլորի հետ չափազանց սիրով եմ վերաբերվում։ Ես շատ չոր եմ ընդհանրապես բոլորի հետ, թե տնեցների հետ եւ թե աշխատակիցներիս հետ, բայց գերագույն ուսուցիչ Չինհային հանդիպելուց հետո ես միայն սիրով եմ խոսում բոլորի հետ եւ բոլորը չափազանց հաճելիորեն զարմացած են, այդ թվում եւ ես։ Being kind is not enough. You have to be kindness. Not just you are being kind, but you have to be the kindness. Yeah? You have to be the compassion. You have to be the love. And then it becomes you. You cannot be anything else but love. Then you are real saint. दूरदर्शी दर्शकों, हम एक संक्षिप्त संदेश के बाद लौटेंगे। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहे। अवधारणात्मक दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में वापस स्वागत करते हैं। भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के सूत्र के अनुसार मैत्रेयी बुद्ध की भूमि उन मनुष्यों से प्यार करेगी जो वास्तव में विघन होंगे। As the people in this world have observed the precept of no killing and no flesh eating, their faculties will be serene and their features will be even and pleasant, as awe-inspiring as those of celestial youths.
경전의 또 다른 명칭은 자심, 불살, 불육식경입니다. 자비심을 갖고 생명을 해치지 않고 고기를 먹지 말라는 뜻이지요. 미륵불의 가르침은 자비로운 비건 정신과 일맥상통한다고 볼 수 있습니다. 인간과 같이 의식을 가진 존재인 동물과 식물을 해치지 않고 살아가는 비건 생활 방식을 따르는 것은 진정으로 부처님의 가르침을 실천하는 삶이라고 할 수 있습니다. A vegetarian diet will definitely help in the sense that it will bring up less aggression in you. First of all, you are harming the animals, you're harming the environment. So that is negative karma. And then imagine eating the meat of a dead animal who has been killed for you. Look at the pain and suffering that the animal has experienced. When you eat that, it becomes part of your body, part of yourself, part of your consciousness. So that's where, a vegetarian diet will be more conducive for the development of compassion, peace and happiness. र मैले जीवनमा एकपल्ट चाहिँ गृहस्थी हुँदाखेरि मैले चाहिँ यो चिवर लगाएको थिएँ। चिवर लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चिवर लाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब सिलहरू पालन गर्नुपर्छ। त्यो सिलहरू पालन गरेपछि त्यत्रो मैले मांस खाने पहिला, तर यो चिवर लाउँदाखेरि चाहिँ गृहस्थी हुँदाखेरि 10-10 दिनको शिविरहरू हुन्छ। त्यो 10-10 दिनको शिविरमा मांस सेवन नगरिकन पूर्ण रूपमा शाकाहारी भएर जीवनयापन गर्दाखेरि मलाई त शारीरिक रूपमा पनि हल्का, मानसिक रूपमा पनि हल्का र वाचिक रूपमा पनि हल्का भएको मैले महसुस गरेको हुनाले यो मांसाहारी हुनुभन्दा शाकाहारी हुनु चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण, जुन चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि हामीलाई फाइदै फाइदा हैन, मानसिक रूपमा पनि फाइदा, शारीरिक रूपमा पनि फाइदा। र भगवान बुद्धको शिक्षा अपनाउनेहरू जसले प्राणी हिंसा गर्दिन भनेर चाहिँ पहिलो शिक्षा हामीले लिनुपर्छ। मांस सेवन नै नगरेपछि प्राणी हिंसा गर्नु पनि परेन, गराउनु पनि परेन, त्यो गर्नेमा सहभागी हुनु पनि परेन, सुन्नु पनि परेन, देख्नु पनि परेन भनेपछि यो शाकाहारी भइसकेपछि भगवान बुद्धको प्रथम सील प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने जुन सील चाहिँ त्यो बेलामा पूर्ण रूपमा पालन गरेको जस्तो मलाई महसुस भएको मेरो व्यक्तिगत अनुभव मात्रै तपाईले सुनाएको। The Economist magazine declared 2019 the year of the vegan as veganism goes mainstream globally. 250,310 people from 190 countries registered for the month-long vegan pledge called Veganuary. Nearly half said they'd stay vegan for good. Google searches for the word vegan quadrupled between 2012 and 2017. In the US, the vegan population skyrockets by 600% over 3 years. 1/4 of 25 to 34-year-old Americans say they are vegans or vegetarians. Canada and France each issue new dietary guidelines that urge more vegan and less animal foods. China aims to reduce meat consumption by 50% by 2030. New York City plans to cut red meat consumption by 50%. Vegan labeled food products in Australia triple in the past 5 years. The global plant-based meat market is expected to grow by 1,000% over the next 10 years, driven by public concerns about climate change, animal welfare, and health. The global plant milk market is growing rapidly, while experts predict the dairy industry could disappear in 10 years. Major meat companies, food companies, restaurants and supermarket chains are now producing and or selling plant-based meat products.
उनके शिक्षण की शुरुआत के बाद से सुप्रीम मास्टर चिंगहाई दुनिया को कई मोर्चों पर वीगन बनने के लिए अग्रणी रही है। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन, मीडिया, सम्मेलनों और पुस्तकों के माध्यम से जागरूकता फैलाने से वीगन खाद्य पदार्थों की आपूर्ति उन्हें अधिक सुलभ बनाने के लिए, पौधा आधारित आहार अपनाना लोगों के लिए आसान बनाने के लिए, उच्चतर स्थानों से आध्यात्मिक ऊर्जा को नीचे लाने के लिए उन्होंने बताया कि एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने और बनाए रखने के लिए मांसाहार नहीं करने का कोई नीति वचन क्यों नहीं है। यह मैत्रेय बुद्ध की भूमि जैसी दुनिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। Và cái khi mà mọi người đều tiến bộ về tâm linh á, tức là ăn chay để bảo vệ động vật, ăn chay để bảo vệ môi trường xung quanh của thế giới, ăn chay để mà tỏ tình thương cho mọi loài, thì dĩ nhiên trong cái từ trường đó thì bao nhiêu điều tốt lành sẽ dẫn đến cho nhân loại. Cái điều cần thiết á, là cái từ trường của nhân loại phải thay đổi, rồi mọi điều khác sẽ thay đổi tốt hơn. Nếu mà từ trường của nhân loại càng ngày càng tốt, chỉ có là tình thương, hòa bình và tôn sùng đấng thiêng liêng, thì dĩ nhiên cái từ trường đó sẽ đem lại mọi điều bất khả tư nghị. Bao nhiêu điều tốt lành, nhiều khi mình không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra cho thế giới. So if we stop the meat production, if we stop eating meat and harming the animals, the good benevolent atmosphere will change everything into a beneficial planet for us. Even before our planet was good, but if we change into vegetarian diet, this planet will become a paradise, will be plentiful, will be peaceful, will be very happy for everybody to live